Hello everyone, this side Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. So today I'm going to discuss binomial theorem with you in this session. So let's start. Let's what we'll be doing is we will be taking each and every statement of binomial theorem, then doing questions on that, and then we'll finally conclude this lecture. So let's start. Firstly, what is binomial theorem? It is a method of expanding an expression that is being raised to any finite power. That is, आपको कोई expression दिया रहेगा and it will be raised to some power, and you want to expand that expansion to some so that you can solve it basically. Like you know that expansion of a square plus b square, a plus b whole square, a cube minus b cube, all those things, a cube plus b cube, all this expansion. If you want to expand, we use binomial theorem. Okay. So some important points: the total number of terms in expansion of x plus 5 power n, मतलब जो मेरी पावर होगी उसमें से ज्यादा जो भी मेरी पावर होगी उससे one term greater would be my number of terms in the expansion, and sum of so ये ध्यान रखना कि number of terms in expansion is n plus 1 and sum of exponents of x and y is always n. This is also important thing. जितने भी मेरे जितने भी exponents होंगे उनको जो sum होगा वो n के बराबर होगा. ठीक है. देन हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं NC0 NC1 NC2 से, एंड ऑल दीज आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. इसको कभी कभी हम लोग C0 C1 लिखते हैं, n को इग्नोर कर देते हैं. एंड जो एक और चीज है इसमें कि मान लो मैं x लिख रहा हूँ NC0 then NC1 then dash 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 NCN minus 1 then NCN. तो जो अब फर्स्ट एंड लास्ट चल करोगे तो बराबर होंगे, मतलब NC0 NCN बराबर होगा, NC1 NCN माइनस 1 बराबर होगा, देन NC2 NCN माइनस 2 बराबर होगा. मतलब बेसिकली जो सीक्वेंस वाला कोफिशिएंट है, मान लो ऊपर n है, तो इनका हम लोग सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, मतलब NCN minus 1. These two both be equal, which means the sum of these two should be equal to n. 1 plus n minus 1 is equal to n, so these two are equal. Similarly, let me take NC n by 2. So n minus n by 2 is n by 2. So basically NC n by 2 is single. इसके लिए कोई भी इक्वल नहीं मिलेगा आपको. Like NC5, so NC5 किसके बराबर होगा? NC5 would be equal to, this thing would be equal to NC n minus 5. मतलब जिनका sum of lower coefficient n के बराबर होगा, that both will be equal. Okay. Moving ahead, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला ये होता है एनसीआर जो होता है इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, और हम लोग एक्स प्लस वाई की पावर एन को ऐसे लिखते हैं सिग्मा आर इक्वल टू सिग्मा अप टू एन एनसीआर एक्स पावर एन माइनस आर इनटू वाई पावर आर. ठीक है. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी. बाकी एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. मतलब ये वाला फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज करने वाले हो. अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं. Let's say आपको दिया हुआ है x की जगह you have been given x by 3 and instead of y you have been given 2 by y. So just replace x and y with x by 3 and 2 by y and then open this expansion. So open this expansion. So firstly it would be r1. So nc1 into n is here. What is given to you? N is 4. So 4c0 r equal to 0 start होगा. X power n minus r, here x is x by 3, so x by 3 power 4 and y power 0 plus 4c1 plus firstly write here 4c0, then 4c1, then 4c2, then 4c3, then 4c4. Okay. And start from power 4 of x and end at power 4 of y. Okay. And then lower 1 power x by 3 cube, x by 3 square, x by 3 1, x by 3 0, and increase 1 power of y, which is 2 by y power 0, 2 by y power 1, 2 by y power 2, 2 by y power 3, and 2 by y power 4. Okay. So lower one power and increase the power. Okay. And it would be NC0, n would be in each and every term, and C0 C1 C2 up to Cn. Cool. So now you can easily calculate the value. You will get x power 4 by 81 plus 8x cube upon 27y plus 8x square upon 3y square plus up to 16 upon y power 4. And C0 is nothing but NC0, which is 4C0, which would be, you can easily calculate using n factorial upon n minus r factorial into r factorial. Okay. And please remember one thing, NC0 is always equal to 1. N
C0 and C0 is always equal to 1. Similarly, NCN is also equal to 1. Take. Please remember these two things. Moving ahead, illustration 2 is again a plus b power n plus a minus b power n. So open it. It will be open like this. See, what will happen is here every second term would be negative. Why? Because in first term y power 0, then in second term y power minus 1. Well, y power 1. So 1 minus will come here, and from here minus will, from here plus will come. So there two terms will get cancelled. So you will only get odd terms, that is NC0, then NC2, then NC4. Only those three terms. This N, C0, C2, and C4. C1, C3 will get cancelled because one is plus and one is minus. So you will get only these three terms, and from there you will get you should expand it, and both will be same. So it will be twice. Then NC0, NC2, and NC4. X power 5, X power 3, Y2, X power 1, Y4. Y power 5 will get cancelled, Y power 3 will get cancelled, and Y power 1 will also get cancelled. That is, odd terms will get cancelled because one would be plus, one would be minus, and in even terms, minus will be squared, so it will again become plus. That's why these two will become equal for even terms, and for odd terms, they will cancel each other. So this is your final answer. Now you can easily calculate 5C0 is 1, so it would be x power 5, and then 5C2 is, you can calculate 5C2. 5C2, that is equal to 5 factorial upon 2 factorial into 5 minus 2, which is 3 factorial. So it would be 4 into 5, 20, 20 upon 2, which is 10. So 10 is written here. Similarly, 5C4 is equal to 5C1 because 4 minus 4 plus 1 is equal to 5. So 5C1 is what? 5C1 is 5 factorial upon 4 factorial, which is 5. So here it would be 5. So you are getting this as a final answer. Now you can put the value of x and y. X is equal to root 2 and y is equal to 1. Putting the values, you will get your final answer as 58 root 2. Okay? So this is the normal binomial expansion, how you expand the binomials. This is the normal way. So I hope you got it. So let's move ahead. Okay, so moving on to Pascal's triangle. So what is Pascal's triangle? Pascal's triangle is nothing but you go on increasing like this and this. Basically, here it will be 1 1 1, then 1 1. The square of 1 1 will be 1 2 1, then 1 3 3 1. Basically यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोफिशिएंट लिखना चाह रहा हूँ. Here it is x plus y square. Here it is x plus y cube. Here it is x plus y power 5. Here it is x plus y power 1 power will get increased, and you will get this as your coefficient. That is, x plus y square is nothing but x square plus 2xy plus y square. X plus y cube is x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube. So in this way, this will go on increasing. So these are basically the coefficients of binomial expansion. So this is represented in form of Pascal's triangle, which is written here. Cool. But all these things are of no use. Basically, you will only use up to here, well, and you will not go further beyond it. So this is only for representation. You only need to learn till here, and you even don't need to learn. When you will solve questions, it will automatically get into your brain. Then now let's open some expansion, which are useful expansion, which you must remember. You can also open them there, but if you remember, then it would be good for you. Like x plus y power n plus x plus x minus y power n is, again, as I told you in the previous question, negative terms will get cancelled out, and you will get only even terms C0, C1, C2, C4. Okay. Similarly, this one, then this one, 1 plus x power n is C0 plus C1 x plus C2 x square plus C1. It is very important expansion. This one, 1 plus x power n, this is equal to C0 plus C1 x plus C2 x square plus Cn xn. Very important expansion. And then again, same thing. 1 is plus, 1 is negative. So all terms will get cancelled, and you will only get even terms C0, C2, C4. And for since you are subtracting here, so only odd terms will be left. Even terms will get cancelled. So C1x, C3x cube, and C5x5. Okay. So this is important one, and the number of terms in the expansion of x plus a power n plus x minus a power n. So it would be n plus 2 by 2. This is, if you can remember, you can remember. But otherwise, if you are thinking that there are many results, then you can also derive them at the particular place only. Okay.
वैसे ये n+2/2 होता है if n is even and n+1/2 if n is odd. Similarly this one. So these two are not of such importance, but these two are, but this one, this expansion and this expansion is very important one. Cool. Please remember at least this one. 1 plus x power n is equal to c0 plus c1x plus c2x square, because this will be used many a times. Coming on to properties of binomial coefficients. Sum of binomial coefficient is always equal to 2 power n. Very important property, very important, again and again used. Similarly, these two are also important. Sum of even coefficients is 2 power n minus 1 is equal to sum of odd coefficients, and alternate plus minus, that is equal to 0. That is C0 minus C1y, because C0 plus C2 plus C4, this would be equal to 2 power n minus 1, and minus of C1 plus C3 plus C5, that is equal to 2 power n minus 1. So basically this is nothing but 2 power n minus 1 minus 2 power n minus 1, that is equal to 0. So these three are of very huge importance, at least for JEE mains. Please remember these three. Let me erase all this ink. Cool. So please remember these three. C0 plus C1 up to C power n is equal to 2 power n. Sum of odd coefficients is equal to sum of even coefficients is equal to 2 power n minus 1. And subtraction of them would give us 0. Okay. And rest three you can also learn, but they will not be of much use in JEE mains. So rest you can learn all these three also. Okay, so now coming on to very important concept of general term. General term in binomial expansion. This is also a very important concept because this is used many a times. So, how can you calculate general term? Basically, firstly, when you will expand x plus y power n, you will get nc0 x power n, and then keep on decreasing power of n minus 1, n minus 2, and increasing y power is equal to y power 0, y power 1, y power 2 up to y power n. Okay. Then general term is nothing but NCR. General term is written in form of TR plus 1. Please remember it. Don't write it L. Don't write it TR. It is TR plus 1. And that is equal to NCR x power n minus r into y power r. This is a very important thing. Please remember it. I am saying it again and again. Okay. Please remember it. General term is TR plus 1, which is equal to NCR x power n minus r into y power r. X power n minus r, where n is the x power y plus x plus y power n, that n is here, and r is the general term, which is tr plus 1. So if you want to calculate t2, then you will take r as 1. If you want to calculate t5, then you will take r as 4, and then write the general term. This is the expansion of general term, and students generally tend to forget this thing, that you have to take r plus 1. That is, you, if you want to calculate term fifth, then you will take r as 4. So this is one thing. Then general term in 1 plus x power n is NCR x power r, because n is equal to n minus r. Then x power n minus r into y power r, क्योंकि यहाँ पे x 1 है and y x है. So y power r is x power r, and 1 power something is 1 only. So forget that one. Okay. Then r term from the end is, हाँ अभी अपने को end से निकालना है, तो that is equal to n minus r plus 2 term. ठीक है. सो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई टर्म दिया हुआ है जो फ्रंट से आर टर्म है, तो फिर वो बैक से n माइनस आर प्लस 2 टर्म होगा. मतलब लेट्स से कोई मेरा एक्सपेंशन इस टाइप का है, x प्लस वाई क्यूब लेट्स से. तो अगर मान लो मेरे को सेकंड टर्म देखना है, तो जो सेकंड टर्म होगा वो n से कौन सा टर्म होगा, वो n से होगा 3 माइनस 2 प्लस 2. मतलब वो n से थर्ड टर्म होगा. ये अपने को पता भी है. एक्स प्लस वाई क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब. सो हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो फ्रंट से सेकंड टर्म है वो n से थर्ड टर्म है. दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर, दैट द फ्रंट टर्म r term from the front is equal to n minus r plus 2 term from the end. Okay. So now let's do one illustration. Find the number of terms in this equation. So इसको मैं लिख सकता हूँ कि लिखा हुआ है 1 plus x square लिखा हुआ है, so it is 1 plus x square power 50, which is 1 plus x power 100. और मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि number of terms is equal to n plus 1. यहाँ पे n is equal to 100, so number of terms is 100. Cool. Then find the fourth term from the end. Fourth term from the end means n minus r plus 2 is equal to 4, and n is equal to 10. So basically
10 minus 4 plus 2 term from the front. That is equal to 10 plus 10 minus 2 is equal to 8 term from the front. That is equal to T8, and T8 is equal to T7 plus 1. That is equal to 10C7 x power n minus r. Here x is equal to 2x. So 2x power n minus r. R is equal to 7 and n is equal to 10. 10 minus 7 is 3. So 2x power 3 into y. Y is minus 1 upon x square. Minus 1 upon x square power r, and r is equal to 7. So here it is the 8 term from the beginning, that is equal to 10C7 2x cube minus 1 upon x square power 7 is equal to minus 960 x power minus 11. So this term is nothing but 4 term from the end or 8 term from the front. Okay, so just remember here also I for calculating 8 term I used TR plus y, that is equal to r is equal to 7. That is why 10C7 2x cube minus 1 upon x square power 7. Cool. Okay, for calculating middle term, now that was about the middle term. Now let's move on to middle term. So middle term के लिए हम लोग क्या करेंगे? We know that अगर n even होगा, then middle term would be n by 2 plus 1. That is equal to 12 upon 2 6 plus 1. If my number of terms are less than 12, then my middle term would be 70 term, which is 12 upon 2 plus 1. But if my n is odd, then n plus 1 upon 2 and n plus 3 upon 2. These two terms are my middle terms, because if n is odd, let's say n is odd 1, 2, 3. Okay, if n is odd, then n plus 1 by 2, which is 3 plus 2 5, 3 plus 1 4, 4 by 2 is 2, which is this term, and n plus 3 by 2, which is 3 plus 3 6 by 2, which is third term. These are the middle terms. मतलब these two are middle terms. Okay, so these are important things which you need to remember because they are of very huge importance. Okay, so but something is wrong here. Here only one middle term would be there. So okay, let's understand with the help of questions. Find the middle term of 1 minus 3x plus this thing. So you know that this is the expansion of 1 minus x cube. So we can write it in this form. And here 6n is even term because it is multiplied by 6. So middle term would be 6n by 2 plus 1, which is equal to 3n plus 1 term. So 3n plus 1 term is nothing but 3, tr plus 1, which is equal to, so 3n plus 1 implies r is equal to 3n. So it would be ncr into minus x power r, which is minus x power 3. So this is my middle term. Cool. Moving on to a particular term. Particular term is nothing but general term only, so you can remove, you can ignore this. Okay, so now moving on to independent term. What is independent term? Independent term is that term that is independent of x or y, that is independent of all the independent variables. So you will write general term, and in that general term, you will make the coefficient of x to be equal to 0, and from that, the value which you are getting for r, that is your independent term. Okay, so let's now calculate the independent term in this expansion. From there, you can understand the whole concept. So what it is saying this formula, and this is nothing but, you can see it. It is x plus 1 upon this is x power. What it is written here? Let me check once again. Okay, you need to rationalize it. When you will rationalize it, you will get it in this form. And similarly, when you will rationalize it, x plus root x हम लोग rationalize करेंगे, then I will get this form. So basically, just after simplifying this, you can reach this form, and this is something like x plus y power 10. So you need the power you need the term which is independent of x. Okay. So firstly, write it in the cool form, that is multiply root x here. So you will get like something like this. And now you need a term which is independent of x. Okay. So for a term independent of x, what you will do, you will justly write the general term. General term would be t r plus 1. The general term, that is equal to ncr 10 c r x power 1 by 3 power n minus r, which is x power 1 by 3 into 10 minus r. That is 10 minus r by 3 into minus 1 by root x power r, and r is r only. So basically now make the coefficient of r of x equal to 0. That is 10 minus r by 3, and here the coefficient of x would be minus r by 2, because x will go upside and then root will become half. So basically minus r by 2. So 10 minus r by 3 minus r by 2, this thing should be equal to 0.
From there, what you are getting 20 minus 2r minus 3r should be equal to 0. From here, you are getting r equal to 4. Okay. So basically, r equal to 4, which means tr plus 1, which is t5. So t5 is the term which is independent of x. So t5 is known as the independent term, and the coefficient of independent term would be 10c4, and 10c4 is nothing but 210. Okay. So 210 is the coefficient, binomial coefficient of the independent term. So what you need to do, you need to write the general term, and then general term make the coefficient of x to be equal to 0. From there, you will get the value of r, and from that you can calculate the term which is independent of x, or you can say independent term. Cool. Very simple concept. Just you have to make the coefficient of r equal to 0 so that you can play with independent terms. Okay, now moving on to the next concept, numerically greatest term in the expansion of 1 plus x power n. So for numerically greatest term, what you will do, for numerically greatest term, what you will do, you will say n plus 1 into mod x upon mod x plus 1 equal to p, where p is positive integer because mod x is positive. Then the pth term and p plus 1 term are the numerically greatest term of 1 plus x power n. So let me make you understand with the help of example. Please remember this thing for numerically greatest term. This expression is very important. So what you will do, you will calculate this expression, and here p is positive integer and f is fraction between 0 and 1. So if you will get this thing as equal to p plus f, then the p plus 1 term will be numerically greatest term, and if you will get this term equal to p only, then p plus 1 term and p term are the numerically greatest term. So basically you have to calculate this thing, and you want to see that this thing is either equal to p or p plus f. If it is equal to p, then p term and p plus 1 term are numerically greatest, and if it is equal to p plus f, then p plus first term will be numerically greatest. So let's understand it with the help of an example. This is the expansion given to you, and you need to calculate numerically greatest term. X value is given to you as half. So first calculate this thing, mod of n plus 1 mod of x into upon mod of x plus 1. So n plus 1 mod alpha upon mod of alpha plus 1, where alpha is nothing but minus 3x. So calculated n is equal to 10 here. So n plus 1 would be 11. So 11 into mod of alpha. Mod of alpha would be mod of minus 3x. And x is equal to half. So mod of minus 3 by 2 will be equal to 3 by 2 upon mod alpha plus 1 upon 3 by 2 plus 1. So we are getting it equal to 33 by 5, which is not p, but it is equal to p plus f, which is a positive integer plus a fraction. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 6 plus 0.6, which means p is equal to 6 and 0.6 is my f, which is the fraction between 0 and 1. Cool. So 6 plus 0.6, and so in this type of expression, my numerically greatest term would be p plus 1, which is 6 plus 1. So 7 term would be my numerically greatest term. So calculate t7 in this case. So t7 is equal to t6 plus 1, 10c is r, which is 10c6, 1 power n minus r, which is equal to 1, minus 3x power r, and r is equal to 6. So 10c6 into minus 3x power 6, you will get your final answer as 10c6 into 3 by 2 power 6. Now you can easily calculate the value from here, which is 10 factorial upon 6 factorial into 4 factorial, multiplied by 3 by 2 power 6. So you will get the numerically greatest term. So please remember this expression, n plus 1 multiplied by mod x divided by mod x plus 1. This term would be your numerically greatest term. This term would be equal to either p or p plus f, which is equal to p, then p at and p plus 1 term would be numerically greatest. And if it is equal to p plus f, then p plus 1 term would be the numerically greatest term. Cool. Moving ahead, ratio of consecutive terms, this is nothing but you need to just calculate two terms and take the ratio. So this is actually simple one. Just if you want to remember the formula, you can remember, but I think you don't need to remember the formula. You can easily calculate it using the concept of binomial theorem. Okay, now moving on to some applications. These applications are very important and many times asked in JEE-Mains.
Okay, let's start with the remainder thing. So whenever you want to find the remainder of something which is raised to power, you need to use binomial theorem. So here what is asked to you, find the remainder when 7 power 103 is divided by 25. So it is an important question. What you will do in this case, you need to express 7 in terms of something which is close to multiple of 25, and you know 7 to the 49, and 49 you can write as 50 minus 1, and 50 is nothing but multiple of 25. So you need to convert your given expression into multiples of the thing, into the multiples of divisor. So 25 का multiple 50 होता है, and 49 is 1 less than 50, so you just converted 7 power 103 into 49. How? You took it 7 into, you know that 49 is 7 square, so 7 square 2 into 51 is 102, so 1 7 would be left, so that 7 is written here. So 7 into 49 power 51 is nothing but 7 power 103, and then you write 49 as 50 minus 1, so you will get 7 into 50 minus 1 power 51 divided by 25. ठीक है, अब अपने को पता है कि जो 50 minus 1 होगा, that thing would be equal to 25k minus 1. How? Because we know that 50 minus 1 को जब मैं खोलूंगा, then I will get something like 50 will be multiplied in each and every term, leaving the last term. Because in last term uh, you will get something like 7 multiplied by minus 1 power 51, that is equal to minus 7. So you will get 7 into 25k minus 1, because हर टर्म में 50 होगा लास्ट टर्म को छोड़ के, तो हर टर्म 25 का मल्टीपल होगा, तो फिर मैं उसको 25k लिख सकता हूँ, और लास्ट टर्म होगा minus 7, so that is equal to here. So from here 25 will cancel this term, so what will be left to you is this term minus 1 by 25. So इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि, let me erase it first. इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इसको मैं पहले खोलूंगा, तो 725 would be 175k minus 25 minus 7 I will get. So minus 7, and I'm subtracting and adding 25. So from there what I'm getting is, I'm basically getting 25 minus 7 equal to 18. So this thing would get cancelled by 25, and what would be left would be 18. So 18 is my remainder to this question. And why I did this? I did this because I needed something to be positive. If I will not do this, then I will get minus 7 by 25. And you know that whenever you get minus, you can't get the remainder, because you know that, let's say you want, whenever you divide 7 by 3, you get 3 into 2, 6 plus 1. So you can say that 1 is remainder because you are getting plus 1. If you will divide 5 by 3, then you will get 3 into 2, 6 minus 1. So basically you are getting minus 1. So you can't say that minus 1 is remainder, because 5 by 3 when you do, the remainder would be plus 2. So basically you need something to be multiple plus something remaining. But here what you are getting 7 into 25, which would be multiple minus something. So you can't set the minus 1 to be equal to the remainder. You need to convert it into plus. So for converting it to plus, I did minus 25 plus 25, and this 25 will go into the, will go with the first thing, which will be a multiple thing, and the remaining would be plus thing. So 18 would be my remainder to this question. So what are the steps basically in doing this question? Firstly, you need to convert the given thing, like here in this question 7 power 103, into the multiples of divisor. So here you converted it into 50 minus 1, which is 49. So from there you separated the part which is divisible by 25 and the other part, and then you converted the minus thing into plus thing, and the remaining thing, which is 18 here, that would be the final remainder for your question. Okay, so I hope you got the concept. So now let's do this question. If the fractional part of the number, this is k by 15, then find k. Basically आपको remainder is find करना है. So again you have 15 है, and you know that 15 is how you can convert 15 into 2. You know that 2 power 4 is 16, and 16 is 15 plus 1. Always try to convert it in form of plus or minus 1. So it will be easy for you to solve further. So 15 plus 1 is 16. So 16 is 2 power 4. So convert it into 2 power 4. So you will get 2 power 4 into 100, which is 2 power 400, but it is 403. So you will be left with 2 power 3. So 8 by 15 into 2 power 4 power 100. 2 power 4 is 16, which you can write as 15 plus 1 power 100. Again, when you will open this, when we will open this binomial coefficient, all terms will contain 15, leaving the last term. Last term would be 100C0, which is 1, 100C100, which is 1 into 1. So last term would be 1 only. So you will be getting 8 by 15 into 15 lambda plus 1. So again, here it is plus 1 only, so you don't need to convert it into some form, because here you are getting plus only.
So 15 will cancel 15 lambda, and what would be left would be 8 by 15. So 8 is your final answer to this question. So remainder would be 8. Fraction part is 8 by 15. So k is equal to 8. 8 by 15 is given to you, and what is asked to you is the value of k. So value of k is equal to 8. ठीक है. So इसमें आपको स्टेप समझ में आ गए. सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको आपको डिवाइजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइजर के मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फर्स्टली यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, देन you need to open the binomial expansion, and after opening the binomial expansion the multiple part would be separated and the remaining part would be separated. If the remaining part is the negative one, then you need to convert it into positive part, otherwise you will take the positive part only and the positive part would be your remainder only. Cool. So this was all the things about remainder, which is very very important thing, frequently asked in JEE Mains. So please remember this thing. Moving ahead, finding digits of number. Finding digits of number. Digits कैसे निकालूंगा मैं? Find the last two digits of 13 power 10. So this is also a very important concept. इसमें मैं कैसे करता हूँ? इसमें जो main crux होता है is firstly I take that power which is close to 10, like 13 square is 169. So I can write 169 as 170 minus 1. From there, why I'm converting it into 169? Because I'm getting 170 and there is 10 in 170. So I need zeros because for when I will compute it using zeros, so I can easily calculate last two digits or even 3 digits, 4 digits, whatever I want. So firstly, convert it into that power which is close to some multiple of 10. So in for calculating remainder, I was converting it into the multiple divisor, and for knowing the last two digits or last digits, I need to convert it into the multiple of tens. So 13 power 2 is 169, which is nothing but the 170 minus 1, and 170 is a multiple of 10. Then now again you write it in the form of 170k minus something. So what you will get? You will get 170k minus 1. You will be getting something like that, 170k minus 1. But what you need is you need last two digits. So how would you do that? So firstly open this thing. When you will open this, it will be something like this, 530 up to 565. Cool. And you know that this would contain 5 zeros at the end, this would contain 4 zeros at the end, this would contain 3 zeros at the end. So from these three things you will be getting 3 zeros. So you don't need these three, so ignore these three, because you need last two digits only now. And when you know that if you are getting last 3 zeros, so adding anything to this thing would be 1 only. So basically you can ignore these 3 digits, and now you are moving on to this part. Here you are getting 170 square, so from here also you will get 2 zeros only, so you can ignore this part also. You only need to check for this part. From here you will get what? 5 into 170 minus 1, that is equal to 849. So basically last two digits would be 49, because उसके पहले तो आपको 100 ही मिल रहा है, तो आप बेसिकली 0 0 में ऐड कर रहे हो कुछ, यहाँ पे आप क्या ऐड कर रहे हो? 849 ऐड कर रहे हो, तो बेसिकली लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी? 49. सो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको टेंस की पावर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, जिससे कि मेरे को लास्ट जो डिजिट्स मिले वो जीरो के फॉर्म में मिले. अगर मेरे को जीरो के फॉर्म में मिलेगी तो उसमें मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो वही मेरा लास्ट डिजिट हो जाएंगे, क्योंकि जीरो में कुछ भी ऐड करने पर मेरे को वही नंबर मिलता है बेसिकली. तो मैंने क्या किया, इसका जो बेसिक मतलब है इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा. जब मेरे को लास्ट डिजिट्स निकालनी होगी तो फिर आई विल ट्राई टू कन्वर्ट माय गिवन एक्सप्रेशन इनटू द मल्टीपल्स ऑफ 10. Like here it was given 13 power 10, so I wrote 13 equal to 169, and then 169 power 5 obviously, then 169 I wrote as 170 minus 1. From there what I did is मैंने उस एक्सप्रेशन खोला और मेरे को लास्ट टू डिजिट चाहिए थी, तो मैंने लास्ट टू जीरोस तक उस एक्सप्रेशन को इग्नोर कर दिया. 170 square will give me 2 zeros, so ignore the expression till 170 square and compute the last two terms, 5 into 170 minus 1. From there you will get you were getting 849. So 49 is the last two digits of your 49 is the last two digits of your question. Simple. So I hope it is समझ में आई होगी. It was quite important. Okay, now moving on to relation between two numbers, which one is larger and which one is smaller. This is also a important concept. मतलब ये भी पूछा जाता है. ये 3 4 5 एप्लीकेशन है बाइनोमियल थ्योरम के, जो अगर आपने मास्टर कर लिए then you can easily do each and every question of binomial theorem. Okay, so अब इस वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं. सॉरी, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या बोला है? इस वाले कॉन्सेप्ट में they are saying
फाइंड द लार्जर ऑफ 99 पावर 58 प्लस 100 पावर 50 एंड 101 पावर 50। तो ऐसे तो अपने को देख कर लग रहा है कि ये बड़ा होगा, लेकिन ये भी बड़ा हो सकता है। तो अपन कैसे लगाएंगे अपन, मतलब उसको कैलकुलेट तो कर नहीं सकते। 99 पावर 50 इज वेरी ह्यूज थिंग विच यू कांट इवन कैलकुलेट यूजिंग कैलकुलेटर्स। So you need binomial theorem for that thing. So आप इसमें तो कुछ कर नहीं सकते बेसिकली, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप 101 को कर सकते हो, यू कैन राइट 101 as 100 part 100 plus 1 part 50, then you try to open it. When you will try to open it, so you know that 99 power 50 is nothing। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, इसमें आपको सिमेट्री भी होती है। जो एक नंबर होता है उसके आसपास के दो नंबर दिए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो 99 is 100 minus 1 and 101 is 100 plus 1। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे 100 दिया रहता है, यहाँ पे 98 और यहाँ पे 102 दिया रहता है, तो वहां पे भी फिर आपको 100 के आसपास के दो नंबर दिए रहते हैं। तो जो आसपास वाले दो नंबर होते हैं हम लोग उसको ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 99 को ओपन करूंगा, तो आई विल ओपन 100 minus 1 एंड आई विल ओपन 101 as 100 plus 1। फिर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूंगा कुछ टर्म्स तक, ठीक है। फिर मेरे को जानना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो मैं ट्राई करूंगा, मेरे को ये तो पता है कि 99 पावर 50 और 101 पावर 50 और 101 पावर 50 बड़ा होगा, तो मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट दिस थिंग, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 2 into 50 इज वॉट, 2 into 50 इज 100, 100 into 100 पावर 49 विच इज 100 पावर 50। सो बेसिकली मेरे को क्या मिल रहा है, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई एम गेटिंग 100 पावर 50 प्लस समथिंग, दैट इज दिस थिंग इज ग्रेटर देन, दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन 100 पावर 50। क्योंकि 100 पावर 50 तो मेरे को पहले टर्म्स से मिल गया ना, तो मेरे को बाकी टर्म्स भी दिए हुए हैं। तो बेसिकली दिस थिंग इज ग्रेटर देन 100 पावर 50। तो मैं 99 पावर 50 को इधर ले जाऊंगा, सो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट 101 पावर 50 इज ग्रेटर देन 100 पावर 50 प्लस 99 पावर 50। सिंपल। सो इसमें अब आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है। पहले वाले रिमाइंडर में मेरे को उसको कन्वर्ट करना है इन मल्टीपल्स ऑफ डिवाइजर। For calculating digits, I need to convert it into the multiples of tens, and for converting for calculating relation between two numbers, मेरे को इसमें तीन नंबर दे रहेंगे, जिसमें जो दो नंबर्स होंगे वो तीसरे नंबर के आसपास वाले नंबर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे 100 है, तो 99 इज नथिंग बट 100 minus 1 एंड 101 इज नथिंग बट 100 plus 1। सो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, then I will do something like this, I will subtract the bigger with smaller bigger। from there जो फर्स्ट टर्म आ रहा है वही मुझे दिख रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है यही थिंग 100 पावर 50 है। सो बाकी टर्म्स इससे बड़े ही हैं क्योंकि सब प्लस वन है, तो बेसिकली 101 पावर 50 माइनस 99 पावर 50 इज ग्रेटर देन 100 पावर 50। तो फिर मैं यहाँ पे 99 पावर 50 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, सो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट 101 पावर 50 इज ग्रेटर देन 100 पावर 50 प्लस 99 पावर 50। कूल। तो इस टाइप से मैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सो आई होप यू गॉट इट। आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। सो व्हाट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट? वही डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैं क्या देखता हूँ, मेरे को देखना पड़ता है कि जो मेरे को नंबर दिया हुआ है वो किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये भी मैं, बहुत बड़ा नंबर दिया रहेगा तो इसको मैं खोल के देख नहीं सकता, तो इसको भी मेरे को बाइनोमियल थ्योरम से करना पड़ता है। अब इसमें भी वो चीज होती है, जो नंबर मेरे को दिया रहता है उसके आसपास वाले दो नंबर यहाँ पे दिए रहते हैं। सो मैं 11 को लिख सकता हूँ 10 plus 1, एंड 9 को लिख सकता हूँ 10 minus 1। फिर इन दोनों को ओपन कर दूंगा, सो आई विल गेट 9 C0 10 पावर 9 प्लस 9 C1 10 पावर 8 प्लस डैश 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 अप टू 9 C9। सिमिलरली आई कैन ओपन दिस पार्ट। ओके, मैं दोनों को ओपन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको उस फॉर्म में लिखूंगा 9 C0 10 पावर 9 प्लस 9 C1 10 पावर 8 प्लस डैश डैश अप टू 9 C8 पावर 10 प्लस 1, 9 C9 इज 1 प्लस 11 C0 10 पावर 11 प्लस, मतलब मैंने सबको ऐड करके लिख दिया। ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है, अब मैं क्या करना चाहूंगा, मेरे को दिया हुआ डिविजिबल बाई 10। सो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इसका हर एक टर्म जो आ रहा है वो 10 से डिविजिबल हो, तभी मैं इसको बोल सकता हूँ कि 10 से डिविजिबल है। सो अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मैं यहाँ से 10 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। सो मैंने जब यहाँ से 10 कॉमन लिया तो मेरे को कुछ मिला, मतलब 9 C0 10 पावर 9, 9 C0 10 पावर 8 प्लस 9 C0 10 पावर 7 प्लस डैश 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 इंटू 9 C8 प्लस, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वन से, वन को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 11 इंटू 11 C0। 11 C0 नथिंग बट वन ओनली। सो यहाँ से मैं 10 पावर 10 ले लूंगा, ऐसे करके मैं सबसे कॉमन ले लूंगा। एंड यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल रहा है 9 10 से 11 से 10 इज 11 से 10 इंटू 10 minus 1 इज 9, 9 plus 1 इज 10 ओनली। सो यहाँ से मुझको एक प्लस वन मिल जाएगा, तो वहां से मैं 10 कॉमन ले लूंगा। सो बेसिकली मैं देख सकता हूँ कि मेरे को 10 इंटू समथिंग टाइप का मिल रहा है। सो बेसिकली अगर मेरे को 10 इंटू समथिंग टाइप की कोई चीज मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 से डिविजिबल है। वही तो मुझे चाहिए था कि ये चीज मैं 10 से डिविजिबल है कि नहीं, ये मुझे दिखाना था, और मैं इसको 10 के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 से डिविजिबल है, तो ये तो मुझे चाहिए था। सो आई हैव शोन दैट दिस थिंग इज डिविजिबल बाय 10 व्हिच आई वांटेड। कूल। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। Moving on to some formulas. So these are some important formulas. Number of terms in the expansion. This thing is n plus one, n plus r minus one, c r minus one, and okay. So you can leave it. This is of not such importance. Coming on to binomial theorem for rational index. So binomial theorem for rational index क्या बोलता है? This is saying like अगर मेरे को कुछ इस टाइप का दिया जाएगा a power वन by l plus b power वन by k, where जो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स मुझे निकालने हैं, तो वो n होते हैं, वो होता है n अपॉन एलसीएम ऑफ l कॉमा k। एलसीएम इज व्हाट? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, व्हेन नन ऑफ n इज द फैक्टर ऑफ and when at least one of n is the factor of this thing, मतलब एक मिनट, number of rational terms in the expression this thing is n upon LCM of this thing when none of n is a factor of, and when at least one of n is a factor of this thing. Okay, just remember this thing that इसके जो number of terms होते हैं वो इतने होते हैं, यहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ है। Let us understand with the help of this example. Find the number of irrational terms in the expansion of this। में कितने irrational terms में कितने terms में बताने हैं, तो मैं जनरल टर्म लिखूंगा। जनरल टर्म इज नथिंग बट टी आर प्लस वन इंटू एन सी आर इक्वल टू एक्स पावर एन माइनस आर इंटू वाई पावर आर। तो वहां से मुझे मिलेगा 100 सी आर फाइव इंटू दिस थिंग, मतलब मैंने उसको ओपन कर लिया। सो यहाँ से मुझे मिल रहा है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, मेरे को बताना है नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। इरेशनल टर्म्स क्या होते हैं? जहाँ पे मेरे को रूट मिले, रूट कटे ना बेसिकली। तो रूट कब कट जाएगा? जब आर 12 होगा तो वाई विल गेट 2 स्क्वायर, जब आर 36 होगा देन आई विल गेट 6 टू पावर 6। सो बेसिकली मेरे को अगर मैं कोई इरेशनल टर्म्स बताने हैं, इरेशनल टर्म्स बताना तो मुश्किल होगा, मैं रेशनल टर्म्स कैलकुलेट कर लूंगा। अगर मेरे को नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स मिलेगा तो मैं उसको टोटल टर्म्स से माइनस कर दूंगा। टोटल टोटल टर्म्स मुझको पता है 100 प्लस 1 होता है, सो टोटल टर्म्स 101 है। उसमें से मैं रेशनल टर्म्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। रेशनल टर्म्स कौन कौन से होंगे? जब मेरे को ये 2 पावर समथिंग में ये समथिंग वैसा मिलेगा कि यहाँ पे 2 पावर समथिंग ऑड ना हो बेसिकली। तो आर की वैल्यू जब 12 होगी तब 2 हो जाएगा, आर की वैल्यू 36 होगी तब 6 हो जाएगा, आर की वैल्यू 60 होगी तब 10 हो जाएगा बेसिकली। तो मेरे को वो वाले आर चाहिए जिससे ये रेशनल बन जाए, तो मैंने रेशनल टर्म्स कैलकुलेट कर ली, उसको टोटल टर्म्स से माइनस कर दिया, तो मेरे को रेशनल टर्म्स मिल गए। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। जब मेरे को नेगेटिव इंडेक्स दिया जाता है तो उसका जो एक्सपेंशन होता है, बेसिकली आपको यही चार एक्सपेंशन काम आएंगे। वन माइनस पर माइनस वन जो होता है इसका एक्सपेंशन होता है वन प्लस एन एक्स एन इंटू एन, यहाँ पे है माइनस वन, मतलब ये स्टेप से है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स क्या बोलता है? वन प्लस एक्स पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वन प्लस एन इज माइनस वन, माइनस वन टू वन, माइनस वन टू माइनस वन बी वन। सो वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। सिमिलरली वन प्लस एक्स पावर माइनस वन होगा तो एन एक्स हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता है। सिमिलरली माइनस टू हो जाएगा, तो फिर ऐसे ही होता चलता जाता है। लेकिन मेन जो दो काम आएंगे आपके वो ये दोनों काम आएंगे, इन दोनों को याद रखना। ठीक है, ओके, अभी क्वेश्चन करते हैं। इफ द सम ऑफ if the sum of coefficients of all even powers of x is 61, then find the value of n। मेरे को इवन पावर ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उनका सम दिया हुआ है 61 है वो, तो मेरे को n की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे टर्म्स में क्या होता है, मैं देखो जो मेरा कोफिशिएंट दिया हुआ है वो मेरे को दिया हुआ है इवन पावर x के लिए, तो ये तो हर x के लिए वैलिड होगा, चाहे मैं x की वैल्यू कुछ भी ले लूँ 1 2 3 4। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। जब मैंने x की वैल्यू 1 ली, तब मेरे को मिला a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश डैश, एंड दैट थिंग इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ठीक है, और जब मैं x की वैल्यू माइनस 1 लूंगा, तब मेरे को मिलेगा a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बेसिकली। मतलब यहाँ पे कैसे आया देखो, जब मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ और जब x की वैल्यू माइनस 1 ले रहा हूँ, तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या होगा, जो मेरे टर्म्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली मेरे को अल्टरनेट प्लस माइनस मिलेगा, और अल्टरनेट, और जो मेरा x को जब मैं 1 लूंगा तो मेरे को सारे प्लस मिलेंगे, जब मैं x की वैल्यू माइनस 1 लूंगा तो मेरे को अल्टरनेट प्लस माइनस 1 मिलेंगे। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सप्रेशन को लेट किया ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डिस्टिंक्ट के बराबर। तो जब मैं एक्स को वन ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा एन, मेरे को यहाँ पे मिलेगा वन, कितनी बार मिलेगा, एक्स की पावर वन से एक्स की पावर टू एन तक जा रहा है, तो मेरे को कितनी बार मिलेगा, टू एन प्लस वन बार वन मिलेगा। सो टू एन प्लस वन इंटू वन वुड बी टू एन प्लस वन ओनली, और यहाँ से ऑल्टरनेट प्लस माइनस वन होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा वन माइनस वन डैश डैश डैश, यहाँ से कितने वन मिलेंगे, टू एन, आखिरी बार मिलेगा वन। तो बेसिकली सारे वंस कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ लास्ट वाला बच जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, टू एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वन दैट इज इक्वल टू टू एन प्लस वन। ठीक है, फिर सिमिलरली जब मैं इसको माइनस वन के बराबर रखूंगा, माइनस वन के जब मैं बराबर रखूंगा तब यहाँ से सारे वन कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक वन बचेगा, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा टू एन प्लस वन। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में चाहे मैं एक्स को वन रखूँ चाहे मैं एक्स को माइनस वन रखूँ, मेरे को एलसीएस से टू एन प्लस वन मिल रहा है। तो टू एन प्लस वन मैंने यहाँ पे लिखा और आरएचएस लिखा मैंने बेसिकली। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ एक्स। मेरे को सिर्फ इवन वाला चाहिए। इवन वाले के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, जब दोनों को ऐड कर दूंगा तब जो ऑड वाले वो कैंसिल हो जाएंगे, वन वन और वन कैंसिल हो गया, थ्री एंड थ्री कैंसिल हो गया। सिमिलरली फाइव और फाइव वाले कैंसिल हो जाएंगे, जितने भी ऑड वाले होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इवन वाले बचेंगे। तो टू टाइम्स इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू टू टाइम्स टू एन प्लस वन। सो टू टाइम्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब मुझे क्या मिलेगा, मुझको ऐसा मिलेगा ना, टू टाइम्स जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझको ऐसा मिलेगा, टू टाइम्स टू एन प्लस वन इज इक्वल टू टू टाइम्स इवन कोफिशिएंट, सारी इवन कोफिशिएंट्स ए जीरो प्लस ए टू प्लस ए फोर प्लस डैश डैश डैश, ऐसे मिलेंगे मेरे को सारे। अब मेरे को पता है मैं ऐसे टू और टू कैंसिल कर सकता हूँ, तो बेसिकली जो सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स है वो टू एन प्लस वन के बराबर है, और वो मुझे दिया हुआ 61। सो टू एन प्लस वन इज इक्वल टू 61, वहां से मेरे को मिल जाएगा एन इज इक्वल टू 30। मेरे को एन की वैल्यू बतानी थी, वो मैंने बता दी। सो मैंने कैसे किया इसको अप्रोच, मैंने इस एक्सप्रेशन को माना कुछ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब के बराबर। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है इसमें जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे एक्स के मल्टीपल्स ही आएंगे। हो सकता है पहले वाला मल्टीपल एक्स का मल्टीपल ना हो क्योंकि वहां से वन मिलेगा, बाकी सारे टर्म्स तो एक्स के मल्टीपल आएंगे ना, तो मैंने एक्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में इसको लिख लिया। मैंने एक बार एक्स को वन रखा, एक बार एक्स को माइनस वन रखा, वहां से मुझे दो एक्सप्रेशन मिले, मैंने दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके मेरे को इवन टर्म्स का सम मिल गया टू एन प्लस वन। टू एन प्लस वन को मैंने 61 के बराबर रख दिया, वहां से आई गॉट द वैल्यू ऑफ एन एज माई फाइनल आंसर। कूल, तो आई होप पीछे समझ में आई होगी। आगे चलते हैं वन लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें मेरे को क्या बोला गया है, इसमें मेरे को बोला गया अल्फा एंड बीटा आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स पावर फोर एंड एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मेरे को एक्सपेंशन दिया हुआ है और मेरे को बोला गया इस एक्सपेंशन में जो एक्स पावर फोर और एक्स पावर स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो अल्फा और बीटा है, तो मेरे को अल्फा और बीटा में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं इसको, मेरे को पता है कि ये ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी टाइप का है, तो मैंने आपको बताया था जिसमें क्या होता है, इसमें जो ऑड टर्म्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ इवन टर्म्स बचते हैं। इवन टर्म्स बचेंगे, इवन टर्म्स ट्वाइस हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ इवन टर्म्स, इवन टर्म्स कौन से होंगे, 60 62 64 और 66। ठीक है, तो मैंने इवन टर्म्स लिख लिए सारे। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेंगे 60 एक्स पावर सिक्स, 62 इंटू फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर विच इज सिक्स माइनस टू विच इज फोर, सेकंड टर्म की पावर टू, यहाँ से पावर टू होगा तो रूट हट जाएगा। सिमिलरली मैं साइड टर्म्स लिख लूंगा, साइड टर्म्स लिख लूंगा तो फिर मैं इसको ओपन कर लूंगा, 601 होता है, 62 32 होता है, ऐसे करके मैं साइड टर्म्स ओपन कर लूंगा, तो मुझको इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा। इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, मेरे को यहाँ से एक्स पावर फोर मिल गया, एक्स पावर टू मिल गया। एक्स पावर फोर का कोफिशिएंट क्या मिल गया, -48 नहीं है, यहाँ पे टू को मत भूल जाना। एक्स पावर फोर का जो कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू -96, एंड सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 36। अब बस मेरे को अल्फा बीटा में रिलेशन चाहिए, तो मैं एक एक रिलेशन चेक कर लूंगा। अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा मेरा -60, तो ए पार्ट गलत हो गया। अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, -132, बी पार्ट सही है। सी पार्ट अपने आप गलत हो गया, डी पार्ट भी गलत है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -60 आ रहा है। ठीक है, सो बी इज माई राइट ऑप्शन। तो जब भी मेरे को ऐसा दिया रहेगा तो इसमें मेरे को दिख रहा है, ये मैं आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी टाइप समथिंग लिखा हुआ है, तो ऑल टर्म्स कैंसिल रहेंगे एंड ओनली इवन टर्म्स विल बी लेफ्ट। तो वहां से मैंने एक्सपेंशन मैंने ओपन किया एंड आई कैलकुलेटेड द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स पावर फोर एंड एक्स पावर टू, वहां से मुझे अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज मिल गई। फ्रॉम देयर आई कैन इजीली कैलकुलेट द माय फाइनल आंसर। कूल, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बाइनोमियल थ्योरम का। मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए थे वो सारे मैंने कॉन्सेप्ट के साथ ही ले लिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, बिकॉज इसमें आपको एक तो चीजें याद करनी पड़ेगी, बहुत सारे फॉर्मूलाज है। सेकेंडली आपको ऑब्जर्व यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी बहुत काम आती है क्योंकि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि व्हाट क्वेश्चन वांट्स टू डू, फ्रॉम देयर यू कैन अप्रोच योर आंसर।
So this is on a bit typical side, but if you will solve previous year questions, then you can know what type of questions are asked in the paper, and from that you can easily cater with this chapter also. Cool. So okay, now let's end this session. Thank you.